हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम आकांक्षा फ्रॉम सुपरग्रैड्स। जैसा कि आप सबको पता है, आईआईएम रोहतक ने आईपीमैट रोहतक की नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है और आज से ही एप्लीकेशन प्रोसेस हैज बिगन. So today this video is solely dedicated for us to look into the application process thoroughly in detail and let's begin. So students, first step will be to register yourself, of course. तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आईपीमैट रोहतक की, तो आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा जहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है फर्स्ट स्टेप में टू रजिस्टर योरसेल्फ. सो स्टार्टिंग विद your name, your date of birth, your email address, and again make sure that you are entering your valid email address because वहां पे जितनी भी फ्यूचर इंटीमेशंस आएंगे वो आपके इसी ईमेल पे आएंगे एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल. तो ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका फोन नंबर, मेक श्योर दे आर एक्टिव एंड वैलिड. और उसके बाद आपका एड्रेस एंड देन आप लोग रजिस्टर करेंगे विच विल intimate you through your contact number and your email address, your user ID and your password. तो जब आप ये फिल करेंगे, ये एंटर करेंगे, तो you will be moving ahead for the further filling of application form. So students, next step once you register yourself will be filling further personal details like your address. तो जैसा कि you can see here on the screen, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड देन परमानेंट एड्रेस. तो ये बेसिक डिटेल्स भी आपको फिल करनी पड़ेगी और प्रेफरेबली आपको ट्राई करना है कि जो आधार पे आपका एड्रेस है वही आप, आधार या फिर 10th मार्कशीट पे जो आपका एड्रेस है वही आप यहाँ पे फिल कर रहे हो. नाउ थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स विल बी टू फिल योर academic details. Now this is a very important and crucial step wherein you will have to keep your 10th mark sheet besides you to fill all the basic details. So as you can see on the screen, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने aggregate marks fill करने हैं and then you have to select your board also and your school also, and with these information you also have to fill the all the subjects, all the main subjects that you chose, I mean you had in your 10th. And likewise, जैसे ही when you will be moving further, so there will be an option for you whether you have completed your 12th or whether you are still appearing for it. So you have to choose between yes or no. So if you have appeared for 12th, if you have already given the exam and you have been received your mark sheet, तो आपको further process होगा to fill all these details which you filled in 10th, likewise in your 12th. But then if you're still appearing in your 12th, तो आप no करके you will be moving forward. Now students, second last step will be to choose your preferred centers. Now you will be getting 3 preferred center options. तो आप अपने priority list के हिसाब से तीनों centers choose करो whichever will be nearest to you. So first will be obviously the one nearest to you. फिर second उससे थोड़ा सा दूर, and lastly which you might go if all those, जिसकी possibility कमी होती है अगर ये दोनों centers रिजेक्ट होते हैं तो जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप विल बी टू अपलोड कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद पेमेंट ऑफ द फीस, द एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज योर फोटोग्राफ एंड सेकेंड इज योर 10th marksheet, third is your 12th marksheet if you have received it, and lastly you have to make the payment. आपको options मिलेंगे through which, like different options through which you can make the payment. And the fees, as I already mentioned in the notification video, will be 3,890 rupees. This was all from my side, students. All the very best for your exams. And if you have any further details, you can contact us via these informations. Bye-bye.